Now, the next topic that we have on our list after diffusion is osmosis, right? So, can anyone tell me what osmosis is? Osmosis क्या होता है? What is osmosis? So, osmosis अकर करने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? हमारे पास कुल मिला के कुछ 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, राइट? और वो कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस हैं? What are the conditions for osmosis? No, Mariam, no homework has been given. Okay, so osmosis. Who can tell me what osmosis is? Osmosis क्या होता है? So again, we're talking about mechanisms of transport, right? चीजें has to move. So osmosis is going to be an example of movement. तो osmosis हमारे पास क्या होता है? It's a movement, right? Movement of what? Movement of what? Okay, I'm sorry, my internet broke off. So whenever we talk about osmosis specifically किसकी movement है? Water molecules की movement है. बात ही आती है water molecules किधर से किधर move करेंगे. Now that's something that I want you guys to tell me. In and out of the cell, okay, fine. So they're going to move in and out of the cell, but how are they going to move? They're going to move from a region of what? Higher concentration to lower concentration. Okay, Rida. Very good, Manahid. Very good. देखो, अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई water molecules through diffusion are moving from a region of higher concentration to lower concentration, that would have been wrong, right? That would have been wrong because that's not osmosis. ये तो diffusion हो जाता है ना, ठीक है? अगर हम very good मारूक, अगर हम कहें कि भाई water molecules are moving from a region of high concentration to low concentration, that's a basic definition of diffusion, right? देखो, movement of particles अगर high down the concentration gradient हो रही है ना, वो diffusion है. Osmosis is not the movement of particles from the region of high concentration to low. Very good, guys. Those who have told me the correct thing. It's a movement of it's a movement of water molecules from a region of higher water potential to lower water potential. All right. तो हम लोगों ने कहा it's a movement of water molecules from a region of high water potential. So I'm going to highlight this word for a while, right? So we can come back to it later. कि भाई water potential होता क्या है sir in reality. So high water potential to कैसा वाला water potential to low water potential. Very good, guys. Across what? Yeah, through what? Partially permeable membrane. कब तक? जब तक नेट मूवमेंट जीरो नहीं हो जाती, जब तक हमारे पास एक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता, इक्वालिटी नहीं आ जाती वाटर पोटेंशियल्स के बीच में, ठीक है? तो हम लोगों ने कहा until the net movement becomes zero, ठीक है? अब before we go further, before we try to understand osmosis, the very first thing that we're going to understand is कि भाई ये वाटर पोटेंशियल क्या है. देखो मेरे बच्चों, जब भी हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जनरली बात कर रहे हैं ना, so osmosis basically deals with solution. Whenever osmosis is occurring, you're basically dealing with water, you're basically dealing with solutions. Whenever we have a solution, the solution is made up of two things. Number one are the things that are dissolved inside of it, which are solutes. So anything that dissolves in what? In a solvent,
द सॉल्वेंट इन आवर केस इज गोइंग टू बी वाटर। हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो चीज जो इन सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर रही है वो क्या है, वो वाटर है। ठीक है। सो द सॉल्यूट सो solution in our case is going to be made up of solute particles and water molecules. अब हमारे पास ये जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, ये है क्या? हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल इज बेसिकली अ रेशियो, राइट? रेशियो बिटवीन व्हाट? रेशियो बिटवीन solute concentration and water molecules. All right. नॉट थ्रू एनर्जी डिफरेंसेस। देखो एनर्जी डिफरेंस नहीं होता हमारे पास यहाँ। एनर्जी डिफरेंस क्योंकि अगर पैसिव मूवमेंट है ना तो एनर्जी डिफरेंस नहीं होती। ठीक है। ये सिंपली एक रेशियो है। हाँ, एएस लेवल में जाके पढ़ोगे, यू विल टॉक अबाउट द प्रेशर वाली चीज अरुष, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद एनर्जी। सॉरी, नॉट अरुष, रेहान, सॉरी। मेक सेंस? अच्छा, अब इसको देखो, अब इसको देखो, कहने का मकसद क्या हुआ, कहने का मकसद क्या हुआ कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। होता क्या है, हमारे पास अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए कंपेयर टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स, right? So what's going to happen? The water potential is going to increase. If the solutes are going to be more, if the solutes are going to be more compared to the water molecules, or if the water molecules are going to be less than the solute particles, the water potential is going to decrease. ठीक है? The water potential is going to decrease. अब हम लोग इसको एक और तरीके से देखते हैं, हम लोग इसको एक और तरीके से देखते हैं। हमने कहा कि whenever we have solutions, whenever we have solutions, हमारे पास जो भी solutions होते हैं, they are, we can divide them into two different types. We can divide the solutions into two different types. ठीक है। अब कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं solutions को? We say कि भाई हमारे पास जो solutions होते हैं, so let's remove this, we don't need this anymore. The solutions can either be number one, dilute, right? Or these solutions can either be concentrated. Now what's the difference between these two solutions? जो हमारे पास dilute solutions होते हैं उनके अंदर कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास क्या चीज ज्यादा होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? So the amount of water molecules is more than the solute concentration. Make sense? And hence they have a higher water potential. अच्छा, this is the symbol for water potential. क्योंकि water potential is a longer word to write. You're not supposed to remember this symbol. कि AS level के जाके तुम लोग याद करोगे। ठीक है। अभी फिलहाल बस I'm just writing this as water potential ताकि it makes things easier for us. All right? अच्छा, अब एक बात ये आती है कि सर हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? Which fluid, which solution has the highest water potential? Pure water. Pure water. Pure water को हम लोग और क्या कहते हैं? Distilled water. Distilled water has the highest water potential. Pure water को हम लोग और क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, मनीषा, मनीषा, give me a minute. It will make sense. It will make sense. Don't worry. देखो, हमारे पास अगर हम लोग इसको सिंपली कहें, हमने कहा दो सॉल्यूशंस, हम वाटर पोटेंशियल में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम एक रेशियो निकालें। रेशियो क्या होता है बच्चा? इट्स अ कंपैरिजन। डू वी गेट दिस? ये वाली बात समझ में आ रही है मुनीजा बेटे? डू वी गेट दिस?
राइट? अच्छा, सो इन एनी सोल्यूशन वेयर कंपेयर टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, राइट? उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. बट इफ a solution is going to be concentrated, if that solution is going to have less number of water molecules compared to the solute particles, what's going to happen? उस solution का water potential जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Do we get this, मेरा बेटा? Oh, this thing, it's a symbol for water potential. So this thing, let me mark it. This is a symbol for water potential जो हमें याद नहीं करना है, but just to save time I'm writing it right here. ठीक है? अच्छा, अब now that we know this, अब इसको अगर हम लोग एक practical life example के अंदर देखें, so हम लोग क्या देखते हैं? So what do we see is that कि let's say अगर let's in a glass of, or let's say in a jug, in a 1 liter jug, if I just put the whole bottle, solute is anything that can be dissolved in water, beta Minail. If I dissolve, let's say, a whole bottle of ruafza in a jug that's only 1 liters, or that has a capacity of 1 liters, what kind of a solution would you be getting? Would you be getting a concentrated solution, or would you be getting a dilute solution? You would be getting a concentrated solution, right? वो का solution बहुत मीठा होगा. Make sense? Right? Similarly, अब let's say एक river के अंदर, if I just, put a whole bucket full of ruafza, is anything going to happen to the concentration of the river? नहीं, वो तो बहुत dilute हो जाएगा. That ruafza is going to be scattered. Why is it going to be scattered? It's because the amount of water molecules in the river are going to be more than the ruafza particles. Do we get this now? Right? So this YW is water symbol for water potential बच्चों. है. moving on. ठीक है? तो यहाँ तक बात समझ में आई? So again, एक बार और देखो. Those solutions where there are more water molecules compared to the solutes, उसका जो water potential होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है? In those solutions which have lesser water molecule compared to the solute particles, जब solute particles compared to the solid particles water molecules कम हो जाएंगे तो water potential भी क्या हो जाएगा हमारे पास? The water potential is going to be low. Does this make sense बच्चा लोग? ये वाली बात समझ में आई? All right. Water potential guys, water potential. All right. Now, अब let's, now that we know this, now that we understand this, एक और चीज समझते हैं हम लोग. I'm going to give you guys 2 words. And before that, एक बात याद रखिए. ये जो solute concentration होता है ना, इसका एक synonym होता है जिसे हम लोग कहते हैं tonicity. So the word tonicity basically means solute concentration. ठीक है? Now let's say if I would give you guys 2 words. So the words that I'm going to give you guys are hypo and hyper. So out of these 2 words, hypo and hyper, which of them do you think means more and which of them do you think means less? तो बस दो लफ्ज है, हाइपो एंड हाइपर. एक का मतलब है ज्यादा, एक का मतलब है कम. Very good. The word hyper
would mean more. The word hypo would mean less. Make sense? Hyper is more, hypo is less. यहाँ तक कोई मसला नहीं? Okay, good enough. अब अगर मैं तुम लोगों से कहूं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, which is hypotonic, तो उसके अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन कम हो गई? सॉल्यूट्स की. मुनी से we'll come to that. We'll come to the third one. Don't worry. Right? So if a solution that is considered to be hypotonic, देखो the word hypo means less, the word tonic means solute concentration. तो इसके अंदर solute concentration क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. The word hypertonic would mean more what? Solute concentration. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? Does anyone have any problem so far? Okay. Now, so now what I want you guys to tell me is which solution is going to be hypertonic and which solution is going to be hypotonic. अब इसको देखो, हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है? उनके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तो कम है, right? So what would you call these, what would you call those solutions that have a lower solute concentration? You would call them hypotonic. Very good, guys. Very good. Right? So those solutions that have lesser solute concentration, they are called as hypotonic solutions, right? And those solutions which have a higher solute concentration, they are called as कौन से वाले solutions? Hypertonic. यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? Does anyone have any problem so far? Amna will tell you. Okay, all right. अब एक छोटी सी बात मुझे और बता दो. Whenever we say, or whenever we have, let's say, hypotonic solutions का water potential क्या होगा? Compared to a hypertonic solution, would they have a higher water potential or would they have a lower water potential? Very good, Aisha. Those solutions which are considered to be hypotonic, उनका water potential क्या होता है? ज़्यादा. Similarly, those solutions which are hypertonic, right? Which are hypertonic, उनका water potential क्या हो जाएगा? कम. Right? देखो बेटे, the word hypertonic and hypotonic is not directly related with the water potential. It's related with the solute concentration. अब देखो इन चीजों को relate करो, ठीक है? कोई भी solution जो कि hypotonic है, उसके अंदर solute concentration कम होगी compared to what? Water molecules. वो solution जिसके अंदर compared to water molecules solute concentration कम है, उसका water potential ज्यादा है. So hypotonic solutions have a higher water potential compared to what? Compared to hypertonic solutions. Hypertonic solutions have a higher solute concentration compared to water molecules. Hence, their water potential is low. Do we get this? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? All right, good enough. ठीक है, अब इस बात में हाइपो और हाइपरटोनिक में कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. अच्छा, अब नाउ बात यह है कि सर
डिफ्यूजन के ऊपर तो मतलब वी डिड नॉट गो थ्रू दिस मच, इतनी लंबी नहीं करी थी आपने डिफ्यूजन के अंदर। ऑस्मोसिस के अंदर इतनी लंबी क्यों कर रहे हो? यू सी बच्चों लोग, व्हाट हैपेंस इज every cell that we have has a fluid on the inside that we call as cytoplasm. And every cell that we have also has a fluid on the outside. उसके बाहर भी कुछ ना कुछ fluid होता है. For example, let's say if I would talk about the cells in my mouth, they have saliva outside of them. If I would talk about cells of the tissues, they're going to have tissue fluid outside them. मेरे blood cells के बाहर प्लाज्मा होता है, ठीक है? तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं ना बेटे, उनके बाहर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड होता है। सेल के बाहर वाले फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के बाहर वाला फ्लूइड, मेक सेंस? Now this extracellular fluid could be anything. It could be tissue fluid, it could be blood plasma, it could be lymph fluid, it could be saliva, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? खैर खैर खैर, बात समझने वाली क्या है, बात समझने वाली क्या है कि देखो, the cytoplasm is a solution. It has dissolved substances inside of it. The fluid outside the cell is also a solution. Now, now both the fluid outside the cell and the cytoplasm, they are separated by a partially permeable cell membrane. Now imagine, अब मेरे पास एक पेशेंट आया, लेट्स से दिस हैपेंस इन अ हॉस्पिटल सेटिंग कि रात को 3-3 बजे पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अब मैं क्या करूं, उस बेचारे पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसकी वेन के अंदर मैं क्या चीज इंजेक्ट कर दूं? डिस्टिल्ड वाटर, राइट? तो जो सेल के बाहर का फ्लूइड होगा, उसका वाटर पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा। Where will all the water molecules move? They're going to move inside the cell of the, or inside the blood cells of that person, causing the person's blood cell to burst, right? And the patient would die, and I would lose my medical license. Similarly, in another case, मैं उस patient के, let's say a different patient, again, because I was half asleep, मैंने उसके blood stream के अंदर एक बहुत concentrated solution of antibiotics इंजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। वो तो concentrated है, उसका water potential तो कम है, water molecules will start moving outside the cell. This will cause the cells, his blood cells, to shrink, again killing the patient. Again, me in a position to lose my medical license. तो खैर, वो बताने वाली बात क्या है? Osmosis is very important for us. Why? Because our body needs to ensure कि भाई जो सेल के बाहर का वाटर फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल है ना, साइटोप्लाज्म का वाटर पोटेंशियल भी वही हो, ठीक है? Those solutions which have the same water potential, they are considered to be isotonic. इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है? We'll talk about it in the next class. खैर, तो this is the importance of osmosis, right? So we'll stop here today. In the next class, we'll talk about osmosis more and most probably get done with this topic. Hope you guys have a good day.